अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्राइट शेडोज। ब्राइट शेडोज में आज हमारे मेहमान हैं जनाब अरशद गालिब साहब। अरशद गालिब साहब ग्लोबल सीईओ है एथ कैटलैंड के नाम से। यूएई में उनका एक स्टार्टअप वेंचर है। आइए बात करते हैं अरशद गालिब साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहजाद साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक सर। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने स्पेशली सुबह के इस वक्त में, आई नो के यूएई में जो है इस वक्त अर्ली मॉर्निंग हो रही होगी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सो नाइस ऑफ यू सर। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। एज आई नो कि आपने भी एक मेरी तरह एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी में स्टार्ट किया था, तो व्हाई यू चूज चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और उसके बाद आप यहाँ तक यूएई में पहुँचे, माशाल्लाह से आपने अपना बिजनेस सेटअप किया। आई वांट टू नो अबाउट योर जर्नी इन दिस प्रोफेशन। Thank you, Shehzad साहब. Thanks first of all for inviting me, and I've been a big fan of yours. So it's my pleasure to be here. Um, Talking about my history, I think आपने क्या याद दिला दिया. Going back the memory lane when we started the education. So I did my primary education in Saudi, Jeddah में. Schooling इतनी ज़बरदस्त नहीं थी, तो पेरेंट्स ने कहा let's ship you back to Pakistan. Pakistan में we'll study. Did my ग्रेजुएशन there in कराची. एजुकेशन जो है वो बढ़ते बढ़ते सोचता रहा कि क्या करना चाहिए, बिकॉज देयर वाज नो गाइडेंस, एंड हमारी फैमिली के अंदर कोई भी प्रोफेशनल एजुकेशन किसी ने नहीं की थी कंप्लीट. एवरीबडी वाज आफ्टर ग्रेजुएशन पार्टेड टू डू देयर ओन बिजनेस. मेमन फैमिली से बैकग्राउंड है, एवरीबडी वाज इनटू द बिजनेस कम्युनिटी, ऑल एंटरप्रेन्योर्स, एंड आई वाज द ओनली वन वांटेड टू जस्ट डू समथिंग अबव एंड बियॉन्ड. तो एज द अदर जर्नीज, लोगों के साथ बात करते करते पता चला कि यार चलो आईबीए का टेस्ट दे देते हैं. तो आईबीए का टेस्ट दिया, मिजरेबली फेल्ड. कुछ उस वक्त समझ में नहीं आया. एक्चुअली टुक क्लासेस ऑल्सो, लेकिन फिर भी बहुत बुरी तरह से फेल हुए. आई कैप का टेस्ट हो रहा था. आई वाज जस्ट रैंडमली जस्ट टर्न्ड अप देयर एंड गिवन एग्जाम्स. मुझे पता नहीं, शायद बॉर्डर लाइन पास ही कर दिया होगा उन्होंने. एंड आई then passed the exams, entered the community. वहाँ पे उस वक्त तक शुरू हो चुकी थी वो क्लासेस. 1998 की बात बता रहा हूँ. वहाँ से फिर मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया जो 2 साल का कोर्स होता है. उसके बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद फोर्ड रोड्स इन कराची. Again, the journey was not very clear in my brain because nobody around me knew about it. In my family, as soon as I go back home, there's literally a new world. तो लोगों से ही सीखा, जो आसपास दोस्त थे, जो सीनियर्स थे. फोर्ड रोड्स में I had an opportunity to work with परवेज साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें. And then I just continued my studies also. माशाल्लाह अल्लाह ने जो है थोड़ा सा दिमाग चला दिया था, तो I became ACCA qualified at the age of 20. ICAP में CA complete कर लिया at the age of 22. So I was done and dusted. अभी आर्टिकलशिप खत्म नहीं हुई थी. So thought what would I do? I was more focused on insurance companies, audits. इसके बाद I got an opportunity to work with Ernst & Young in Bahrain. तो flight पकड़ी, ship to Bahrain. We were just like the first few batches of people who were sent to Bahrain. Different world outside of Pakistan. Although I had a traveling experience before, लेकिन जब पहुंचे बहरीन के अंदर तो दुनिया ही different थी. The working style was much different from what it used to be in Pakistan. Of course, the grind was absolutely different. लेकिन वो काम करने का और भी मज़ा आया. Insurance companies कुछ की, but then I started focusing on banking and capital markets. वहाँ पे 2 साल लगा है. After my articleship was finished, I was employed by them. Then I decided to start applying for roles in Western Europe. वहाँ पर IFRS UK के अंदर जो है implement हुआ था, 2005 की बात है. So I got an opportunity. I got jobs offers from PwC, from Deloitte, and from KPMG all. So I chose Deloitte. I went to Deloitte in London in their banking and capital markets division. वहाँ पे 7 साल लगा है मैंने. I became the senior manager. We had a batch of around 40 people. That was a new experience for Deloitte to hire experienced people. Otherwise, people put them from a graduation route. 7 साल रहे वहाँ पे. क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का लीडर बना मैं. सॉरी, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आप ये बताइएगा. अभी आपने मेंशन किया कि डिफरेंस था जो पाकिस्तान में था और फिर बहरीन में पता चला, एंड देन यू मेंशन अबाउट योर फर्दर जर्नी. तो उसी ये बताइए कि क्या डिफरेंस था मेनली. पाकिस्तान में ऐसा क्या नहीं है जो वहाँ पे था?
I think Pakistan में जो at least in CA profession we were flooded with people. You know, हमारे पास internship पे इतने सारे लोग होते थे, and the cost of us was nothing. My first paycheck was 1,000 rupees, Pakistani rupees. तो वो flood होता था. You know, it was casual attitude, risk based approach नहीं थी. You wanted to audit everything. Here, when I came, it was absolutely, you know, organized. You need to do certain things in a certain way, risk-based approach. Environment was different. Client was very receptive. It's a different ball game. That was also good in Pakistan. This was also very actually excellent. Then when I merged the two, depending on where the variabilities were required, that has given me such a powerful position to be in. मुझे पता था कि डेप्थ में भी कैसे जाना है, मुझे पता था कि हूवर अराउंड भी कैसे करना है. So that has worked out really in my favor. फिर क्वालिटी एश्योरेंस डिवीजन का हेड बना. वहाँ पे मैंने इंटरनल ऑडिट किए. आई वाज अबाउट टू बिकम अ डायरेक्टर देयर इन डिलॉयट इन लंदन ऑफिस. 5,000 लोगों का कैंपस था. इट वाज अ ह्यूज प्लेस. बट वो आई हैड डिजायर ऑलवेज टू कम बैक टू द रीजन. पाकिस्तान जा नहीं सका. अपॉर्चुनिटीज मुझे लग रहा था कि मिडिल ईस्ट में ज़्यादा हैं. तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम पार्टनर इन वीडियो बहरीन ऑफिस. मैंने कहा बताओ मुझे कहाँ साइन करना है, जस्ट शिप बैक. और फिर मैंने आई स्टार्टेड माय जर्नी विद वीडियो बहरीन इन ऑडिट फंक्शन. आई बिकेम द हेड ऑफ टेक्निकल for the region, head of technical assurance. I became the head of risk for the region. Mashallah, continue to work on large number of variety of clients. Audit में, strategy में, trainings में. I got involved. Leadership के साथ काफ़ी काम किया. वीडियो ओमान कतर के साथ काम किया. Global leadership के साथ काफ़ी काम किया. And in between, I got just got been there, done that, कुछ और करते हैं. My younger brother यासिर गाडित, I thought मैं उसको पुश करता रहा. वो भी अनसन यंग में सीए बन चुका था. मैंने कहा यार let's do something of our own. तो 2015-16 I started our own company called ATH Guideline. माशाल्लाह one thing led to the other. Fast forward, हम लोग 100 लोगों की कंपनी अब. और assurance, accounting, tax advisory सारी services provide करते हैं. We've got offices in 4 countries. We've got Bahrain, Oman, UAE and Saudi covered. We've got a small rep office in UK also. और साथ में बहुत सारी जर्नी के और भी पहलू हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. बट दैट्स द sort of long and short of it. जी. अभी जो आपका ये जो आपने फर्म बनाई है एथ गाइडलाइन, और जैसे पाकिस्तान में एक सीए फर्म बनती है, इसमें भी कोई डिफरेंस है या बिल्कुल सेम मॉडल होता है? We've started with the consulting model. We have not gone out to take an audit license as yet, but we've done partnerships. So we've got an extension of us who has an audit license, but we wanted to focus on advisory more. Idea ये था शहजाद के यार वो जो box standard audits होते हैं, box standard advisory होती है. I wanted to go above and beyond that. I wanted to just partner up with the clients to an extent of not just advising but executing also. बट मुझे रियलाइजेशन थी कि कुछ तो फीट ऑन द ग्राउंड लाने पड़ेंगे पहले. आई जस्ट वांट टू रेप्लिकेट एटलीस्ट गुड एट रेप्लिकेटिंग और एटलीस्ट हैव सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी जो मैं बड़ी फर्म्स करती हैं. उसके बाद आई कैन गो अबव एंड बियॉन्ड. तो माशाल्लाह अब तो कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जहाँ पे हम इक्विटी पार्टिसिपेशन कर चुके हैं उनके साथ ऑन सर्टेन प्रोजेक्ट्स. सो आई डोंट वांट टू लिमिट माई सेल्फ इन एन एडवाइजरी बॉक्स. तो फिर वो but I think audit is part and parcel of our business. We cannot run away. I've been an auditor for 21 years. So audit के license पे we've started sort of getting. So we are mashallah have been fortunate enough to get involved in 2 audit licenses in Bahrain and UAE, and in Oman and Saudi also. We are just getting into the space of audit. So but a different ball game. We started different. The first step was advisory and then we moved into audit. अच्छा, पाकिस्तान में ऐसी सक्सेस स्टोरीज क्यों नहीं मिलती? दैट्स गुड. आई एम हैप्पी टू नो कि आपने वहाँ पे फॉर्म भी किया, 100 लोगों की कंपनी भी हो गई. दैट्स ग्रेट. बट डू यू थिंक कि अगर ये चीज़ आप पाकिस्तान में करते, या मुझे कोई ऐसी स्टोरी नहीं मिलती कि इतनी कम टाइम में 100 लोगों की इतनी अच्छी फर्म बनी हो पाकिस्तान में. सो एनी व्यूज ऑन दैट? I think Pakistan में भी equal opportunities हैं, and I'm sure the back office businesses for international serving is on the rise. आपको अगर accountancy space से थोड़ा सा बाहर निकल जाए तो IT space के अंदर आपको मिलेंगी firms. आपको voice business में मिलेंगी, आपको call centers मिलेंगे.
which are bulk supply. We have a aspiration to have our sort of large base back office in Pakistan also, inshallah. We've started the journey already. I'll tell you about a little bit later about our new startup. But I think the opportunities are there. It's just that you need to go and grab it. पाकिस्तान के अंदर तो अब बहुत ज़्यादा लोग जो है बिजनेस करना चाहते हैं, and I'm also interested, although I was intending to do it in Pakistan, लेकिन अभी तक कोई opportunity मिली नहीं because we are sort of so occupied here. But I think अब जो back office हमने बनाना शुरू किया पाकिस्तान में, so there is lot more opportunities and 100 से ज़्यादा लोगों की opportunity आराम से बन सकती है. The space of at least the offshoring of staff, काफ़ी काम है उसके अंदर भी. परफेक्ट. अच्छा, थोड़ा सा मैं इस पे जाऊंगा रीजनल में कि जैसे पाकिस्तान वर्सेस से इंडिया. तो एज फार एज आई नो कि इंडिया में बीपीओ की इंडस्ट्री ट्रेमेंडसली ग्रो कर चुकी है और बहुत सारे जो मल्टीनेशनल्स हैं उनके बैक ऑफिसेस या उन्होंने आउटसोर्स कर दिए इंडिया में. पाकिस्तान क्यों उस जर्नी पर नहीं गया और अभी भी लगता है आपको कि अभी भी स्पेस है कि पाकिस्तान उस डायरेक्शन में जा सकता है? I think ये बहुत ज़बरदस्त और relevant point है. So I think I'll just give you a little bit of a story. मैं जब ये शुरू करा था अपना venture, तो I had different options कि यार मैं organically grow करूँ, बिल्कुल scratch से start करूँ, या I was thinking कि यार I'll go and acquire a smaller firm and then I'll start sort of building it up. So my cost will be paid for, and then I'll just pay the ROI to the investor to the extent that desire is. उस वक्त मैं जब रिसर्च कर रहा था बीपीओ के ऊपर, that was like 2015, and डॉन के अंदर एक आर्टिकल आया था and it was replicating the thought which I wanted to do कि पाकिस्तान जो है राइप है बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग के लिए. एंड वो उस वक्त से लेके अब तक जो अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेबिलिटी हो चुकी है पाकिस्तानी कम्युनिटी की वो उसकी यूजेज जो हो सकती है रिमोटली, well, that was fantastic. और पाकिस्तान इंडिया से comparability in terms of the language, in terms of the technical know-how was much better. Pricing was much better, more competitive in Pakistan. Challenges जो आते हैं वो ये आते थे कि यार सिक्योरिटी का क्या होगा, मुझे ब्रेक डाउन तो नहीं हो जाएगा, मुझे कम्युनिकेशन ब्रेक तो नहीं हो जाएगा, मैं जो है वो लोगों को हाथ से पकड़ के समझा सकूंगा कि नहीं, गवर्नेंस है कि नहीं. देयर वाज अ डिजायर ऑलवेज कि कुछ करना चाहिए पाकिस्तान के साथ, लेकिन वो कभी भी जो है वो क्रिस्टलाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है. यू हैड टू सेल पाकिस्तान मोर देन द आउटसोर्सिंग मोर. But अब things are changing. Scenario is completely changing. You will be pleasantly surprised if people would love to work in Pakistan. हमारे न्यू स्टार्टअप का सेटअप का जो 10 लोग बैठे हुए हैं आईटी की टेक्नोलॉजी के, they are all based out of Pakistan, इस्लामाबाद. तो वो इंडस्ट्री अब बढ़ती जा रही है. इंटरनेट का इशू था बहुत बड़ा कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी का बड़ा इशू था. तो अब जो है वो अगर द स्टेबल इंटरनेट इज देयर और टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस कैन हैपन, पीपल आर नाउ मोर क्लूड अप के यार इंटरनेशनल काम कैसे करना है. फाइवर अपवर्क ने काफ़ी काम किया जो फ्रीलांसर्स इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर को इंडिविजुअली भी काम करके बता सके, तो उनको एक अंदाज़ा हो गया है कि किस तरह से डिलीवर करना चाहिए वर्क एट द लार्जर स्केल. तो मुझे तो लगता है कि वी आर इन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पोजीशन टुडे. If somebody were to set up, and I'm going to tell everybody who is listening to this conversation that don't wait for anything. Today is a golden period of Pakistan to go for an outsourcing unit. तो हम तो बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. अभी 2022 में हमारा major plans to set up our back office for the wider world, not just for us in Pakistan, inshallah. Good to hear. अच्छा, क्योंकि आपने फाइवर का मेंशन किया तो देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स और जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि पाकिस्तान जो है वो एक असेसमेंट के थ्रू कोई नंबर 4 पे भी पहुंच चुका है इन डिजिटल आउटसोर्सिंग. और उसमें अगर आप मेनली जो कैटेगरीज देखें तो उसमें फाइनेंस के बहुत सारे रोल्स हैं. अब वो फाइनेंस के रोल जब मैंने उसमें जाके देखे अपवर्क में, फाइवर में, तो मुझे नज़र आया कि बहुत सारा जो गैप है वो अकाउंटेंट्स हैं जो कि नॉर्मली क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स नहीं हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसमें बहुत कम है, विच मीन्स कि एक मासेस हैं जिन्होंने एक बेसिक अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन की या मे बी उसका सीए कंप्लीट नहीं हुआ एंड दे स्टार्टेड डूइंग समथिंग ऑन फाइवर अपवर्क. अब वो जाके किसी जगह पे वो बिजनेस पहुंच चुके हैं. सो मेरा पॉइंट ये है कि जो क्वालिफाइड लोग हैं वो इतने कम क्यों हैं? आपको मुश्किल से कोई इक्का दुक्का लोग मिलते हैं जब आप सर्च करें प्रोफाइल्स के.
तो और जबकि जो अनक्वालिफाइड लोग हैं वो ज़्यादा पहुंच गए, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने मे बी शायद $5 की फीस से स्टार्ट किया, बट नाउ दे आर मेकिंग गुड मनी. एनी टेक ऑन दिस? I think that's the spot on point you made sort of yourself. Fiverr is for $5. You know, $5 के लिए काम है. It's a cheap and dirty work. People are not there for quality. कोई लोग हैं, किसी ने कंपनी बनाई छोटी सी, बोले मुझे लोगो चाहिए, मुझे वेबसाइट डिज़ाइन चाहिए, मेरी अकाउंटिंग संभाल लेना, अब मुझे चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं, and it's a very basic, you know, very raw work. No science required. But and I'll give you some statistics. So $7 trillion की इंडस्ट्री है प्रोफेशनल सर्विसेज की. दैट इंक्लूड्स अकाउंटिंग, टैक्स, कंसल्टिंग, वेब डिज़ाइन, IT, what not. So all the professional services put together. Or you would be surprised to hear that less than 1% is served online. ठीक है? And that is a huge gap in the market. तो होता क्या है कि ट्रेडिशनली वी आर ऑल अकस्टम टू, यार मैं बंदे को मिलूंगा, उससे बात करूंगा, लॉट ऑफ प्रपोजल्स लूंगा, फिर उसको असेस करूंगा, फिर उसको डिलीवर करने के लिए साथ में लेके जाऊंगा. इट्स अ टीडियस प्रोसेस एंड वी लव इट. यू नो, हमको बहुत मजा आता है कि हम बहुत सारे लोगों को असेस करें, एक्वायर करने के लिए, और एक हमारे साथ डे जॉब हो जाती है. एफिशिएंसीज इज लाइक गोइंग डाउन द ड्रेन. तो जो ये जो काम है वो ऑनलाइन अभी डिलीवरी इसी किस्म का हो रहा है. व्हाट इज कमिंग अप नाउ, व्हाट्स नेक्स्ट इज अपवर्क एंड गुरु, टॉपटेल, and few very niche pieces of work. So IT industry के अंदर you would be sort of again surprised to see कि बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है. मतलब अगर मंथली you're talking about पाकिस्तानी रुपी टर्म में 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 लाख के असाइनमेंट्स इंडिविजुअल्स को दिए जाते हैं, नॉट इवन द फर्म्स. एंड फर्म्स आर आल्सो कमिंग अप. तो बहुत ही अर्ली स्टेजेस हैं, लेकिन ये दिस स्पेस इज ह्यूज. मैं आपको थोड़े से और नंबर्स देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि ये इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा और ऑनलाइन आने लगी और आने चाहिए और ज़रूरत भी है. ट्रैवल इंडस्ट्री अगर आप 15-20 साल पहले पहुंचे हैं तो हार्डली एनीबडी वुड वांट टू बाय टिकट्स ऑनलाइन. मतलब आपके पास ट्रैवल एजेंसीज भरी पड़ी थी और आप लोगों को लाइन लगती थी, लोग एक के बाद एक बैठते थे, वो अपना पूरा आइटनरी बताते थे. अब कहाँ होता है वो ना, आपको याद, अब कहाँ आपको याद पड़ता है कि लास्ट टाइम आप कब ट्रैवल एजेंसी गए थे जहाँ पे आपने बोला कि मुझे टिकट चाहिए, और अनलेस एंड अनटिल कोई यू स्टक समवेयर कि यार उम्रे का, हज का मुझे टिकट नहीं मिल रही, इसके बाद आप उसके अलावा आप ट्रैवल एजेंसी जाते ही नहीं. So at that point in time, the internet penetration for acquiring tickets online was less than 5%. Abhi aapko pata hai, it's 75%. So the whole industry has moved online. And similarly, the efficiency is required. People are loving it. Freelancing is loving it. N number of new platforms are coming up. तो ये जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हुए हैं जो क्वालिफाइड हैं, they will feel the urge, but I think it will take another couple of years for it to mature a little bit. वो ट्रस्ट फैक्टर आ जाएगा बायर का भी, तो I think the sellers of services, professional service providers will be more inclined to get on these platforms and deliver the services. मेरा point of view, these 2 cents. जी जी. अच्छा, मुझे एक थोड़ा सा ये समझना है कि ऐसी जितनी भी प्रोडक्ट्स आती हैं टेक स्पेस में, वो मेनली जो है वो आपके जो डेवलप कंट्रीज हैं वहीं से आती हैं, राइट? और उसमें अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो अमेरिकन प्रोडक्ट्स में आप कोई भी चीज़ देख लें, चाहे वो होटलिंग हो, उसमें चेंज आया आपका टैक्सी बिजनेस चेंज हो गया, ठीक है, आपका शॉपिंग बिजनेस चेंज हो गया, यू नेम एनीथिंग. सो मेनली जो टॉप मोस्ट कैटेगरी है वो डेवलप नेशंस है और सबसे ज़्यादा अमेरिका से. मुझे ये बताइए कि हम क्यों ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं ला सकते? क्या हम इनोवेटिव नहीं है? क्या हम कोई नया और अब तो हमें सब पता है, और ज़्यादातर अगर आप देखें तो मिडिल मैन का बिजनेस जो है वो ऑनलाइन चला गया. अगर शॉपिंग की बात करें अमेजोन है, होटलिंग की बात करें एयरबीएनबी है, टैक्सी की बात करें उबर है, करीम है, तो ज़्यादातर मिडिल मैन का बिजनेस है. नाउ वी अंडरस्टैंड ऑल दिस फैक्टर्स. हमारे अंदर क्या कमी है कि हम कोई ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स नहीं ला पा रहे हैं करीम के अलावा? करीम भी अगेन वाज नॉट बेस्ड आउट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, और उसका मॉडल ऑलरेडी था. हम कोई नया प्रोडक्ट क्यों नहीं लाते?
I think that has always bamboozled me, that question, and I've been thinking about it. I think यहाँ पे भी I was surprised when I used to go out to larger companies, which are like filthy wealthy people who go and run family businesses like anything, and number of multiple dimensional businesses. But what they end up doing all the time कि यार चलो मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज ले लेते हैं, KFC के फ्रेंचाइज ले लेते हैं, किसी लार्ज कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं, but you have all the ability and the capacity to develop something of your own. Why you're always bowing towards the Western world's ideology of कि यार उन्होंने जो किया होगा वो सही किया होगा तो हम उसको फोटोकॉपी कर लेते हैं. आज भी यहाँ पे स्टारबक्स के ऊपर लाइन लगती है when somebody locally opens up a coffee shop. वहाँ पे हार्डली कोई जाता है. ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी का मैटर है, ब्रांड वैल्यू एक बात होती है, बट यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन कि यार हम क्यों नहीं कर सकते. And I've never been able to get this answer. There is the people who are building the engine of the larger organization in the US and America and UK, or anywhere in the Europe or Western world. You would be again you would know कि वो हम ही लोग कर रहे हैं. मतलब पीछे बैक एंड पे इंजन हम है. मुझे प्रॉब्लम पता कहाँ लगता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में प्रॉब्लम है, वो हमारे गट्स में प्रॉब्लम है. You have to have that guts to believe in yourself कि यार ये हो सकता है, it is possible, it is doable. और वो कोहेरेंस नहीं है, एक मतलब मिल के सबके साथ काम करने की एक डिजायर नहीं है कि यार मैं सबको लेके साथ चलता हूँ. आई नीड टू बिल्ड द राइट काइंड ऑफ टीम एट द राइट टाइम. मैं इस दोनों कंपनी जो बनाई, ATH गाइडलाइन बनाई और ProWireOnline.com जो अभी हमने लॉन्च कर दिया, इट्स लाइव. A fantastic journey because I knew that there are things which I cannot do and I don't know about, and I'm very open about it कि मुझे नहीं आता, but जिसको आता है उसको ढूंढना मुझे आता है. And I think I've been put across a lot of question marks. यार ये तो नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. But then if you've been there, आपके पास यार 20-22 साल का अगर एक्सपीरियंस है. मैंने 1000 कंपनीज का ऑडिट किया है, 1000+ कंपनीज का ऑडिट किया है. जब मैंने इतने कंपनीज को ऑडिट करते हुए देख के मुझे पता है निटी-ग्रिटीज ऑफ एवरी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के, उनके वीकनेसेस क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मैं यूज करने से क्यों कतरा रहा हूँ. आई एम इन एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पोजीशन टू बी एन एंटरप्रेन्योर. मतलब मैं शायद पहले करता तो मुझे इतना नहीं पता होता, मुझे अब बहुत कुछ पता है जो मैं उसको क्रिस्टलाइज कर सकता हूँ. आई थिंक वो गट्स का भी प्रॉब्लम है, और वो एक हम कंफर्ट जोन में भी बहुत आ जाते हैं जब हम एटलीस्ट प्रोफेशनल एजुकेशन में. जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो दे गेट कंफर्ट जोन अगेन बाय द फैक्ट कि यार पहले दिन पे कैश कहाँ से मिलेगा, rather than I have to invest something to build something of my own. यहाँ पे कुछ ब्रांड्स बने हैं, मतलब दुनिया में मशहूर ब्रांड्स हैं, वो यहाँ के मिडल ईस्ट के, वो एमिरेट्स है फॉर एग्जांपल. आपका पाकिस्तान का अगर कुछ भी प्रोडक्ट्स उठा लेगा, हार्डली शान का मसाला आपको नेशनल के मसाले मिलते होंगे कहीं पे शेल्फ में, इसके अलावा कुछ है ही नहीं. देयर इज नथिंग, एवरीथिंग एल्स इज बीन इम्पोर्टेड. मुझे लगता है गट्स का प्रॉब्लम है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है कि यार ये हो सकता है. They don't think twice. और अच्छा इकोसिस्टम भी बहुत अच्छा बना हुआ है. I think it just helps you to take risks. जाओ रिस्क लो, क्या होगा, ज़्यादा फेल होंगे, we will keep trying it again and again. I think वो ओवरऑल. लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर जितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, I'm so happy to see कि वो जो थॉट लीडरशिप आ रही है. I think अब the next breed is going to be completely different इंशाल्लाह. तो हमको नजर आएंगे absolutely brand new brands which will be replicated by West inshallah in future. जी नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे अर्शद की से रिगार्डिंग स्टार्टअप्स इन पाकिस्तान. स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू. वेलकम बैक नाज़रीन. ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अर्शद साहब से. अभी स्टार्ट ही उन्होंने किया था कि पाकिस्तान में स्टार्टअप तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. आइए बात करते हैं. जी अर्शद साहब, स्टार्टअप्स की आपने बात की थी बिफोर द ब्रेक, तो क्या आपको लगता है कि ये कैसे बातें हो रही हैं, सिर्फ हाइप है या रियल स्टार्टअप्स आ रहे हैं और उसका बाकी कोई फ्यूचर है? जी आई थिंक अभी अर्ली डेज है. मेरा पर्सनल व्यू ये है कि वी आर स्टिल लर्निंग फ्रॉम द मैच्योर बिजनेसेस.
अभी आपको बहुत ज़्यादा फोटो कॉपिंग मिलेगी. Photo copying in this e-commerce business is not like walk in the park. The execution matters. तो उसको भी एक अच्छे तरीके से कर लेना, it's a huge challenge. Then I think we will then start getting into the game of innovation. अभी जो है हम we will at least for 3 to 4 years we'll just follow the trail left behind by the West, और फिर then we will start coming up with our own brand new products and services in Pakistan. That's what my view is. The money which is being pumped into the industry here, that will bring back the talent. आपको बहुत ज़्यादा नजर आएंगे कि पाकिस्तान में talent वापस आ रहा है बाहर से. And that is a good news for Pakistan. So when they come, they will meet the like-minded people of local talent versus international experience coming together. You will see innovation in 3 to 4 times, something completely brand new, which others will replicate. That's my view. Okay. अच्छा, जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो इनोवेशन है क्या? मतलब इनोवेशन की बहुत सारी डेफिनेशंस होंगी. फॉर अर्शद गार्डन, व्हाट इज इनोवेशन? एक अकाउंटेंट का जो माइंडसेट है, तो कैसे देखते हैं इनोवेशन? पता नहीं, अकाउंटेंट का माइंडसेट तो बड़ा अरसा हुआ साइड में रखे हुए. मुझे लग रहा है कि आप trying to be a thoroughbred entrepreneur which just doesn't think about things in numbers terms. I think the more I do that, the more I think that it becomes I become more fearless. Because otherwise numbers will put you down कि यार ये तो काम नहीं करेगा, तो then the numbers will not be in your favor. Innovation मेरे लिए वो है कि जो एक लाइव आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आप उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं डिफरेंटली. That's innovation for me. I think back in those days when Uber started, that's innovation for me. आप उसको इम्प्रोवाइज करते जाएं, उसमें पेमेंट्स डाल दें, उसमें वॉलेट्स डाल दें, आप अपनी किसी भी चीज़ में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस में थोड़ा सा और डिजिटलाइजेशन कर लें. आई वुडंट कॉल इट इनोवेशन. इनोवेशन फॉर मी इज something completely brand new, which has not been done before. That is innovation. So I think that mindset will let you strive for something absolutely brand new. वो साइंटिस्ट की तरह हो गया, साइंटिस्ट बैठा हुआ अपना एक्सपेरिमेंट किए जा रहा है, कभी ना कभी तो कुछ क्रैक करेगा. I think if you ask me about innovation, that's what I call innovation. वरना बाकी सब चीजें replicate. So innovation is just like invention to you. Absolutely. Absolutely. अच्छा, दूसरा आपने बात की rather than accountant you focused on के entrepreneur mindset है. तो क्या डिफरेंस है सर अकाउंट क्यों लोग अपने आप को एज एन अकाउंटेंट की सोच वाला बताने में फख्र महसूस नहीं करते? नहीं, I'm very proud that. जी, यू आर नॉट द ओनली वन. बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि नहीं, हम अकाउंटेंट नहीं रहे, हम अकाउंटेंट से आगे निकल चुके. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू. आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई एम श्योर यू हैव हर्ड आल्सो ऑन लॉट ऑफ वेबिनार्स एंड थिंग्स. सो इससे क्या है, जरा बताइए. नहीं, I think maybe misunderstood the comment here. Accountant is a basic need. You know, मुझे लगता है कि being an accountant is an honor. क्योंकि you can see through things which you cannot otherwise. But I think the box of accounting has to sort of go out. उसको कोई यूज भी करना चाहिए. आपको अकाउंटिंग पता है, आपको मैथ्स पता है, आपको साइंस पता है, आपको स्टैटिस्टिक्स पता है, तो you need to use it somewhere else also. आप सिर्फ IFRS की इंटरप्रिटेशन देते ना रह जाओ पूरी जिंदगी में. आपके टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में ना बात करते रह जाओ जिंदगी भर. आप उसको यूटिलाइजेशन कैसे होगी, इसकी वाइडर यूज कैसे होगा, उसको गवर्नमेंट पॉलिसीज में किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा, वाइडर कम्युनिटी कैसे यूटिलाइज करेगी उसको. आपके टैलेंट को सिर्फ वहाँ पे सिर्फ किसी की ओपिनियन देने के लिए किसी के बिजनेस पे ना लिमिट कर दें. You think outside of the box. I think this is again a very loosely used term of thinking outside of the box. But just go outside of your layer of understanding of accounting standards. The community and the corporate world is much bigger than that. So that's the whole idea I was talking about. Numbers, knowing your numbers is an absolute an add-on. लेकिन this is not just a one limited skill set which you possess. So that's what I think in contrast I was just trying to make a entrepreneurial mind में you need to take risks. मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन देखे हैं, मैं बहुत सारे दोस्त हैं, and they have absolutely fantastic acumen to become businessmen.
लेकिन उनका स्टार्ट ही ये होता है कि यार व्हाट इफ समथिंग गो रॉन्ग। हम लोगों को सिखाया जाता है ना, व्हाट इफ समथिंग गोज रॉन्ग। हम तो ऑडिटर की मेंटालिटी में यही है कि यार हमको देखना है कि व्हाट इफ समथिंग गोज रॉन्ग। तो हम वो इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि आपकी कन्वर्सेशन ज़्यादातर ये होती है कि यार व्हाट इफ ये गलत हो गया तो, अगर वो गलत हो गया तो, मैंने अगर ये नहीं सही तरह से किया तो, मतलब आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि यार अगर मैंने ये कर लिया और ये चल गया तो, अगर ये मैंने कोई नई चीज़ सोची है एंड इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द मार्केट तो क्या होगा, मुझे अगर पैसे अरेंज करने तो मैं कहाँ से करूँ रादर देन कि नहीं होंगे तो वो एक माइंडसेट का डिफरेंस है, क्योंकि हमको नंबर्स जो है ना बहुत ज़्यादा पुश डाउन करते हैं। तो आपको अच्छा, जस्ट मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है उसी हवाले से। देखिए, अकाउंटेंट जो है वो एक बिजनेस के बिल्कुल मिस्ट में कोर में होता है ना। कहीं पे एक पूरी कंपनी में कुछ भी हो रहा हो, अगर आप कंपनी में एक सीएफओ का मॉडल देखें, तो कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सीएफओ के पास ना हो? ठीक है, उसको बिजनेस के भी समझ है, उसको मार्केटिंग की भी समझ है, एचआर के साथ भी है, सीईओ के साथ भी लगा हुआ है, बोर्ड के साथ स्ट्रेटेजी में भी लगा हुआ है। आउटसाइडर्स अगर देखें तो ऑडिटर्स के साथ भी इंगेज्ड है, लॉयर्स के साथ भी इंगेज्ड है, आपके जो रेगुलेटर्स हैं स्टेट बैंक, एससीसीपी, उनके साथ भी इंगेज्ड है। तो आउटसाइड वर्ल्ड में भी कम्प्लीटली इंगेज्ड है एट द कोर ऑफ बिजनेस और विद इन द बिजनेस भी ना। अच्छा, इस शख्स से ज्यादा नॉलेज किसके पास होगी, मेरा एक सवाल है। और इसके बावजूद जो लोग अपने वेंचर्स स्टार्ट करते हैं, पता चलता है कि मार्केटिंग वाला बिजनेस है, वो कोई नई प्रोडक्ट है, नया वेंचर लेकर आ गया, ठीक है, कोई सेल्स वाला बंदा कोई चीज़ लेकर आ गया, ऑपरेशन वाला बंदा भी ले आता है। मिनिमम जो लोग न्यू वेंचर्स की तरफ जाते हैं वो है अकाउंटेंट। हालांकि उसको सबका पता है, हर चीज़ का पता है। मार्केटिंग वाले को शायद फाइनेंस की नॉलेज हो भी ना, फिर भी वो अपना वेंचर स्टार्ट कर लेता है, रिस्क टेकर होता है। वो क्या चीज़ है जो, हालांकि रिस्क मैनेजमेंट में भी अकाउंटेंट है ना, तो समझना मैं ये चाह रहा हूँ कि वो क्या चीज़ है जो हम रिस्क टेकर नहीं है, मैं खुद भी अकाउंटेंट हूँ, जबकि बाकी लोग जो है वो रिस्क लेके आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया आपने। यू स्टार्टेड गेटिंग टू द कोर ऑफ द इशू हियर। मुझे लगता है कि जब मैं दोनों साइड पे बैठा हूँ, आई बीन एन एम्प्लॉई एंड आई बीन एन एम्प्लॉयर ऑल्सो। जो फ़र्क मुझे नज़र आया है दोनों साइड पे कि जब हम लोगों के बिजनेसेस को बड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं, वी आर स्टिल नॉट एट द फ्रंट लाइन। ठीक है, हम उसको अंदर से जानते हैं तो हम काफी घबरा भी जाते हैं कि यार अगर ये मेरे साथ होता तो आई वुड हैव बीन इन अ वेरी बैड पोजीशन विद द रेगुलेटर, विद टैक्स अथॉरिटीज, विद व्हाटएवर स्टेक होल्डर्स यू सेड, बी इट एम्प्लॉइज और बी इट योर शेयर होल्डर्स। आप काफी घबरा जाते हो कि यार मैं इस पोजीशन में होऊंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, हाउ वुड आई एक्चुअली बेयर द लॉसेस। और वो जो माइंडसेट है आपका कि यार मैं और वो मैं बताऊं वो फ्रंट लाइन में नहीं है। मैं आपको डिस्टिंक्टिवली बता सकता हूँ कि मैं जब ऑडिट फर्म में एक सैलरी पेड पार्टनर था वर्सेस मैं अपनी फर्म में डेली अपनी वेजेस निकालने के लिए भागता हूँ मार्केट में, द माइंडसेट हैज कंप्लीटली चेंज। और वो आप उस लेवल पे अपने आप को एक्सपोज ही नहीं कर पाते। आप चाहे जितना बोल लें कि मुझे मार्केटिंग, एचआर, नंबर्स की सब समझ है, व्हेन यू एक्चुअली एट द फ्रंट एंड डीलिंग विद द क्लाइंट्स योरसेल्फ एंड मेकिंग श्योर कि आप उसको डिलीवर कर पाओ, प्लस उसके जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैं वो आपको डायरेक्टली बेयर करने पड़ेंगे, that's a completely different ball game. So you guys, you must have seen all other entrepreneurs also. मुझे लगता है कि वो जो फियर है कि मैं उसको कंटेन कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन पता चल गई है कि अब मुझे थोड़ा ज़्यादा डर लगने लगा है। जो मार्केटिंग वाला है उसको इतना ज़्यादा पता ही नहीं है, आई थिंक वो नाइविटी के अंदर भी शायद कर रहा है कि यार उसको तो पता ही नहीं है, गलत होगा तो क्या गलत हो जाएगा, मुझे तो ज़्यादा पता ही नहीं है। इनको इतना ज़्यादा पता है कि अब वो ज़्यादा फेयरफुल हो गए कि यार अब मुझे तो सब कुछ पता है कि इन्स एंड आउट, कि यार गड़बड़ कहाँ हो सकती है, एंड वी बिकम टू कैलकुलेटेड। बस वहां पे मुझे लगता है मेरा पर्सनल व्यू है कि शायद ये प्रॉब्लम होता होगा। लेकिन मैंने दोनों साइड पे देख के शॉकिंगली अपने आप को जो है वैल्यूएट भी किया है कि यार मैं सर्टेन डिसीजन इफ आई वुड हैव टेकन व्हाइल आई वाज एम्प्लॉयड बाय समबडी एंड आई वुड नॉट टेक दोस डिसीजन व्हेन आई एम एक्चुअली सिटिंग एंड एज एन एम्प्लॉयर। So, in a way, ignorance is also a blessing. आई थिंक कह सकते हैं आप, मुझे लगता है कि यही बात है। लेकिन हो सकता है कि कुछ और भी फैक्टर्स हों, बट मैंने जितने भी लोगों को देखा है ना, मतलब शहजाद, मैं अक्सर बातें करता हूँ क्योंकि अब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो लोग पूछते हैं यार तुमने कैसे किया, मुझे भी दिल चाहता है करने का, कैसे करें। मैंने ICAW को प्रेजेंटेशन दी है, मैंने ACCA को प्रेजेंटेशन दी इसी टॉपिक के ऊपर। और बहुत डर है, मतलब बहुत डर है कि यार कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो क्या होगा, मेरा किचन कैसे चलेगा,
मतलब अल्लाह ने भेजा आपको तो रिस्क तो दे ही देगा, और इतना तो दिमाग है कि आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे अपने लिए, कुछ नहीं करोगे तो अपना घर तो चला लोगे। अच्छा, इसी डिस्कशन को मैं आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। जनरेशन्स में हमसे पहले एक जनरेशन थी, हमारी एक जनरेशन जो अभी 40s में है, फिर हमारे बाद वाली जनरेशन हैं जो अभी 30s या मे बी 20s में है। 20s में है वो तो मतलब जस्ट लाइक जो मिलेनियल्स हैं। मिलेनियल्स का माइंडसेट तो बिल्कुल मेरा ख्याल है डिफरेंट है हमारे माइंडसेट से। एंड दे टॉक अबाउट इम्पैक्ट। आई डोंट थिंक कि वो पैसों के लिए या उसके लिए कभी काम करेंगे। दे विल नॉट सिट लेट लाइक अस जस्ट फॉर द सेक ऑफ करियर बनाना है। आई डोंट थिंक कि उनका ये माइंडसेट है। क्या ये माइंडसेट हमें हेल्प करेगा जब वो इम्पैक्ट वाला माइंडसेट आ गया? देखिए, हमारे लिए जो फेसबुक लाइक्स हैं जो इतने शायद मीनिंगफुल ना हो, उनके लिए मीनिंगफुल हैं जो लाइक्स आते हैं, जो रिव्यूज आते हैं। दे आर वेरी मच, वो इसकी डॉलर वैल्यू शायद समझते हैं। हमारे लिए क्या डॉलर वैल्यू है अगर हमारी कोई लाइक्स आते हैं? आई डोंट नो उसमें क्या हम उसको वैल्यू करते भी हैं। बट मिलेनियल्स आपको क्या लगता है, और खास तौर पे पाकिस्तान की अगर देखा जाए तो अराउंड 70% पॉपुलेशन इज अप टू 30 ईयर्स ऑफ एज। क्या ये एक ब्लेसिंग होगी पाकिस्तान के लिए, और क्या ये फिर क्या कहते हैं डिजास्टर भी हो सकता है? जो टेक ऑन दिस। आई एम अ फर्म बिलीवर के जो ये न्यू ब्लड आ रहा है, वील हैव टू लिसन टू देम टू लार्ज एक्सटेंट, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू द अपबीट ट्रेंड्स इन द मार्केट टुडे। हम थोड़े से, एज यू राइटली सेड, कि हम थोड़ा सा पास ऑन हो चुके हैं। एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड कि मेरी बेटी है 15 साल की, और मैं उसको बिठा के बात करता हूँ, आई टेक बिजनेस डिसीजंस डिस्कशंस विद हर, क्योंकि जो उसको पता है वो मुझे मेरे ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं है कि ऐसा भी होता है मार्केट में। और वो उनका व्यू अब जो है वो, क्योंकि ब्रीड ही डिफरेंट है, तो आपको एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, आपको पर्सपेक्टिव एब्सोल्युटली चेंज्ड है। और जो नए मैं लोग भी रखता हूँ, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स व्हिच आर कमिंग थ्रू द पाइपलाइन, अमेजिंग यार। आई थिंक शहजाद, और ये जो हमारी पाकिस्तानी जो कम्युनिटी भी ग्रो करके आ रही है, इफ दे हैड एन अपॉर्चुनिटी टू कम विद थ्रू अ डिसेंट बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन, दे आर ब्रिलियंट। तो वो मुझे लगता है दैट दे विल बी द गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द वर्ल्ड। सो वेट एंड वॉच इज व्हाट आई से। इनके लिए सबसे बड़ा मोटिव क्या है? क्या उनके लिए मोटिव से फॉर एग्जांपल जैसे हमारे लिए था करियर है, या किसी के लिए वेल्थ होती है? मुझे लगता है कि ये दे आर मोर फोकस के इसका इम्पैक्ट क्या होगा। बातें जो मैंने लोगों से समझा है, सुनी है, दे टॉक अबाउट इम्पैक्ट। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपको लेजर शार्प फोकस रखते हैं ना, इधर उधर की बातें ना करो, लफाजी ना करो मुझसे, मुझे लेजर शार्प फोकस, इससे होगा क्या, इससे हासिल क्या होगा? एंड देर एब्सोल्युटली ब्लंट ऑन योर फेस कि यार इसका फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ रहा, तो मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम? एंड आई थिंक यू समटाइम्स नीड दैट रियलिटी चेक, यू नो, या यू राइट, आई थिंक वी कैन डू इट डिफरेंटली। एंड आई थिंक आई ऑलवेज टेक इट विद ओपन आर्म्स कि यार आओ बताओ कि क्या मसला है, मतलब आप क्या मालूम, हमको नजर ही ना आ रहा हो, वी आर सो ब्लिंकर्ड विद ऑल द अदर थिंग्स व्हिच वी हैव सीन इन पास्ट। ये तो मैंने देखा था, ऐसे ही चलता था पहले भी, तो अभी भी ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन these guys come with absolutely the impact mindset, laser sharp focus, तो और वो आपको जो है सही डायरेक्शन में करने के लिए बहुत ज्यादा कारामद रहता है। तो मुझे तो लगता है कि दैट एटीट्यूड इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई चैलेंज तो करे ना यार, वरना मतलब ये शेयर्स जो बहुत मिल जाते हैं, कोई बोल के बैठ के बोले ना कि यार ये क्या बकवास है, तुम you're not going in the right direction, you know, correct yourself and then we will go in that direction. When I was in the UK also, मुझे बहुत मजा आया। I think UK में जो 7 years, the graduates which come out, and we used to have focus groups with them कि यार तुम बताओ, तुम अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू आए हो ना, बताओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या तुमको गड़बड़ नजर आती है। And the feedback they used to give was much better than a mature person would give you a feedback, because they will completely come cold on you, and with the impact driven mind was very useful for us in making the required changes in the organization. अच्छा, यहाँ पे फिर मैं आपको एक और फोकस पे लाना चाह रहा हूँ कि उस जनरेशन के लिए हमने एजुकेशन में क्या किया है? क्या ये लोग भी वही पढ़ रहे हैं जो हमने पढ़ा था? हमने अकाउंटेंसी में गुप्ता शुक्ला पढ़ी थी, क्या आज भी हम गुप्ता शुक्ला पढ़ा रहे हैं?
एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, और क्या IFRS भी आगे जाके रेलिवेंट है? डबल एंट्री बुक की हमने सारी जिंदगी निकाल दी, क्या आगे ब्लॉकचेन आ जाएगा तो क्या डबल एंट्री से तो बढ़ के ही है ना, मेरा ख्याल है वो तो मल्टी एंट्री है। तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो आपका मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो आपका लीगल इन्वायरमेंट हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, आपको क्या लगता है, और खासतौर पर मैं पाकिस्तान के हवाले से पूछ रहा हूँ, कि क्या हम उस जनरेशन को तैयार कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, से अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल में जो हमें चेंजेस ऑलरेडी नजर आ रहे हैं, एंड चेंजेस आर ऑलरेडी हैपनिंग राइट नाउ, तो क्या हम उनको तैयार कर रहे हैं या हम वही चीजें बढ़ा रहे हैं जो हमने पढ़ी थी? यार मैं पाकिस्तान से निकले हुए बहुत अरसा हो गया जो, लेकिन मुझे पता चलता है अपने दोस्तों यारों से, रिश्तेदारों से, आई थिंक दो डिफरेंसेस हो चुके हैं मुझे जहाँ तक पता है। जो ग्रास रूट लेवल की एजुकेशन है, जहाँ नर्सरी से बंदा निकलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में जाता है, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, that is still going through a lot of I think deliberation but not much change. आपको वैसे ही पढ़ाया जा रहा है जैसे पहले पढ़ाया जाता था, इस्लामियात, सोशल स्टडीज एंड व्हाट नॉट। वो कल्चर आप थोड़ा जो स्कूल में पढ़ते हैं, आई थिंक यू मस्ट नो कि वो मतलब स्टार्क डिफरेंस पाकिस्तान में जो मुझे पढ़ाया गया था, जो मेरे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे ब्रिटिश स्कूल में, दे गो टू एब्सोल्युटली डिफरेंट। वहाँ पे चेंजेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहाँ पर आपका माइंड जो है ना, क्वेश्चनिंग माइंड बनता है, आप यू बिकम स्केप्टिकल कि यार, और आपकी अवेयरनेस होती है, द कन्वर्सेशंस these kids have today relative to the kids which I've been interacting with in Pakistan is much different. प्रोफेशनल एजुकेशन में जब पहुंचते हैं आदमी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आई थिंक वो जो है, वो दरिया जो निकला है बाहर एजुकेशन का, इन्फॉर्मेशन का, वो अपना बांध तोड़ देगा। तो पीपल वुड बी इंक्लाइंड टू एक्चुअली प्रोफेशनल एजुकेशन टू अलाइन इट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि, और फिर वो वहां पे फंस जाते हैं लड़के, क्योंकि उन्होंने बेसिक फाउंडेशन अच्छी होती नहीं है और इतना इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि दे स्ट्रगल। तो उसमें से कुछ लोग निकल जाएंगे एंड देन दैट विल बी द वन, दे विल बी द वन हु विल पुश द चेन टू फिक्स इटसेल्फ। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई थिंक द होल चेन विल फिक्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द इन्फॉर्मेशन फ्लड इज सो हैवी that वो people will start asking question। मतलब kids have already started asking question, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मतलब this is useless, what are you teaching me, tell me something which I don't know। this हम क्लास में जाएंगे तो पता चल जाएगा कि यार ये तो मुझे पता है, मतलब कुछ नया बताओ। तो वो अब वो फोर्स करेगा बैक एंड पे जो बच्चे आ रहे हैं उनको एजुकेशन का लेवल स्टैंडर्ड चेंज करने के लिए। तो मुझे लगता है कि द टाइम विल इटसेल्फ विल करेक्ट द होल एजुकेशन सिस्टम। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि जो ट्रांजिशन में डिफिकल्टीज आएंगी और इंस्टीट्यूट्स को स्टूडेंट खुद चैलेंज करेंगे कि आप ये हमें क्या पढ़ा रहे हैं, हम ये तो रेलिवेंट ही नहीं है, तो वो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा हमें, और इसके जो चैलेंजेस हैं वो सबको फेस करने पड़ेंगे। करेक्ट। क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो फ्रीली अवेलेबल है, हर किसी को पता है कि वर्ल्ड में क्या चेंजेस आ रहे हैं। बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन अभी फ्लड हुआ है, मतलब आप बच्चों को सब कुछ पता होता है। द न्यू जनरेशन व्हिच कम्स टू ऑफिस आल्सो, वो आपको लाके दिखा देते हैं कि सर ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है इधर, तो ये आप क्या बता रहे हैं। मैंने कहा हाँ भाई, बात तो तुम्हारी ठीक है, कहाँ लिखा हुआ दिखाओ जरा। तो दे नो मोर देन यू, वो खुद ब खुद आ जाएगा। लाइक टाइम विल करेक्ट इटसेल्फ। ट्रांजिशन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन जो हमारी अभी यूथ आ रही है अभी पाकिस्तान में, मैं जो हमारे आईटी डेवलपर्स हमने रखे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर हमारे, यार क्या उनका दिमाग चलता है शहजाद, क्या दिमाग चलता है। मतलब दे बीन सर्विंग द यूएस मार्केट, यूके मार्केट, एंड इवन द पीपल हु हैव नॉट सर्व्ड द यूके मार्केट, यूएस मार्केट। इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी है उनके पास, रिसर्च के मटेरियल्स के ऊपर हाथ इतना साफ है उनका, यू नो यू गेट लाइक शॉक्ड, यार ये इसको कैसे पता है। तो मुझे लगता है कि इट्स ऑलरेडी देयर। अभी थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला कि हम वी विल सी अ ह्यूज चेंज इन पाकिस्तानी कम्युनिटी, तो आपको नजर आएगा। और आई थिंक दैट विल डिमांड चेंजेस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आल्सो, नॉट जस्ट इन अकाउंटेंसी, इन एजुकेशन। वो बेसिक हेल्थ केयर पे भी सवाल होंगे, वो नॉर्मल लोगों की इंटरेक्शन पे भी सवाल होंगे, रिलीजियस क्वेश्चंस भी होंगे, पॉलिटिकल भी होंगे, बट दैट्स अ गुड ट्रांजिशन टू हैव, रियली आई एम टेलिंग यू। ठीक है, मेरा ख्याल है काफी सारे सवालात तो हमने कर लिए हैं। एनीथिंग यू वांट टू फोकस अपॉन बिफोर मूविंग टू द रैपिड फायर राउंड? बस मैं जस्ट थोड़ा सा अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था कि मैं बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, अपनी फर्म तो बनाई, कंसल्टिंग का रेप्लिकेट किया, टैक्स, अकाउंटिंग, एडवाइजरी, एंड दैट इज माशाल्लाह गोइंग रियली वेल, एंड इट्स
fostering. The strategy is being built, एक के बाद एक हम कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं, ट्राई करते हैं, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे जो है हम एक्सपेरिमेंट करके आगे बढ़ा रहे हैं. बट वन थिंग विच आई ऑलवेज sort of wanted to keep in mind कि यार टेक्नोलॉजी के यूजेज के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता. तो हाउ कैन आई डू दैट? और इसीलिए मैंने ये देखा कि हम जो छोटी फर्म्स हैं वर्सेस बड़ी फर्म्स हैं, उसके अंदर हमने प्रोफेशनल सर्विसेज को जो है दो में बांट दिया है. या तो आप बड़ी फर्म हो या तो आप कुछ नहीं हो. देयर इज नो लेवल प्लेइंग फील्ड. तो इसके लिए हमने अपनी ये जो नई बिजनेस लॉन्च किया है, प्रोफेशनल सर्विसेज मार्केट प्लेस. इट्स अ मार्केट नेटवर्क प्लेटफॉर्म. इट्स प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडर्स भी होंगे इसके अंदर, सर्विस प्रोवाइडर्स जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स है वो होंगे, फ्रीलांसर्स होंगे, एजेंसीज होंगी, मैच्योर एजेंसीज होंगी और न्यू एजेंसीज होंगी. And then we'll bring the right kind of buyers for them. और networking का एक facilitation भी की हुई है. यहाँ पे होगा क्या इसके बाद कि it will become a level playing field for everybody. So that's the idea. तो मेरा सिर्फ बोलने का मकसद ये है, इस बात बताने का कि आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी में नजर आए आपको कि यार कहीं पे स्पेस है, कहीं पे गैप है, don't think too much, you know, just try it out at least once. तो अभी हमने जब अपने गेट्स ओपन किए हैं प्रोवायर ऑनलाइन के, I was so happy to see 3 weeks में we've got 3,000 suppliers signing in, and they're just going flooding the platform. आपको just you need to just pick up one point. इंशाल्लाह अल्लाह करेगा तो देखते हैं आगे क्या होता है इसके साथ. But I think if you have an idea, if you have a desire, if you think something would work, at least try it. I think वो रिजल्ट फिर अल्लाह के हाथ में है कि किस तरह से जो है उसका आंसर मिलता है. Thank you very much. Now rapid fire round में हम आपको कुछ topics देंगे and you have to respond quickly and we want you to ignite some fires. Are you ready for that? Sir, देखते हैं इंशाल्लाह. I'm ready. I'm all charged up. Sir, great. सबसे पहले सबसे आसान, your take on knowledge economy. Just a quick response. In need of an hour. I mean, need of the hour. Adversity is a blessing. Agree or disagree? Disagree. Disagree. Okay. Change or transformation, and why? Transformation. Change is like very basic requirement of change. Transformation needs a wider change, not just in one thing. It's the wider changes, subset, multiple changes required in transformation. Leaders are born. I disagree. Disagree. And why? I have seen n number of people who are like literally nothing, and they've groomed themselves to be leaders. So I totally disagree with that. Leaders are not born. Okay. Accountants of the past, CFOs of now, and data officers of future. That's the way it has to roll. There's no way out of it. Okay. Now, significance of network और आपका क्या व्यू है? जैसे CFO क्लब भी हमारा एक नेटवर्क है. There are some other networks, platforms. तो ये जो प्लेटफॉर्म कल्चर है, is it a blessing? इसके एडवांटेजेस ज़्यादा है, डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है, और आपको क्या लगता है कि ऐसे फोरम से फायदा हो रहा है पाकिस्तान को खासतौर पे? These are the powerhouses. नेटवर्क के बगैर कुछ नहीं है. I think स्टडीज मैंने पढ़ी हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें network becomes the top reason why people actually acquire business, new relationships being made. Network is the way to go. So बिल्कुल इसको और foster होना चाहिए, नए forums बनने चाहिए. आप अपना खुद ही अपना experience देख लें आपका CFO के network में. और वो जिस तरह कपिल शर्मा शो में बोलता है कि यार वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली आपसे मिलने की, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसी मौका मिलेगा कि मैं आपसे मिल पाऊंगा, लेकिन वो नेटवर्क के थ्रू ही हुआ ना पॉसिबल. शहजाद, तो नेटवर्क इज द वे टू गो. अच्छा, एक सवाल जो इस प्रोफेशनल इंटरव्यू से बिल्कुल अलग से है, बट आई वुड लाइक टू आस्क यू, और खासतौर पे वो कुछ रेलिवेंट फॉरम्स में भी मैं भेजना चाहूँगा. यू आर फ्रॉम द मेमन बैकग्राउंड, राइट? सो मेमन के बारे में एक व्यू मुझे जानना है. और अगर पाकिस्तान में देखा जाए, मैंने वर्ल्ड वाइड रिसर्च की उस पर, विकीपीडिया के मुताबिक सिर्फ 1.8 मिलियन, शायद डेटा कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन मैंने बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएमओ वगैरह में बात की. आप इसका डबल कर 36 लाख लोग होंगे, चले मैक्सिमम पूरी दुनिया में मिला के 40 लाख होगा. 40 लाख इज नथिंग, 4 मिलियन पीपल, बट द इम्पैक्ट इज ह्यूज वर्ल्ड वाइड.
और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तो अगर आप देखा जाए तो भाई 70% चलता ही मेमन बिजनेसेस के ऊपर है। आप बड़े बड़े ग्रुप्स उठा के देख लें, आप पूरा यूनुस ब्रदर्स देख लीजिए, ये जो लंकी ग्रुप है आपका, फिर आपका एंग्रो का पूरा ग्रुप है, आरिफ हबीब है, बहुत सारे, बहुत मतलब ग्रुप्स उठा के देख लें, पूरे पूरे ग्रुप जो है वो दे आर ऑन बाय मेमन। ठीक है, क्यों मेमन जो है वो बिजनेस में इतना ज़्यादा आ गया डिस्पाइट की पॉपुलेशन बहुत कम है। और इसी तरह चैरिटी में तो मुझे लगता है कि कराची में तो 95% चैरिटीज आर रन बाय मेमन्स। सो आई वांट टू आस्क यू अबाउट दिस मेमन्स इन्फ्लुएंस। पता नहीं, आई थिंक दिस इज इन आवर जीन परहैप्स। वो मेरे अब्बा तो मुझे आउटकास्ट कर दिया था मेरे अब्बा ने कि यार तू नौकर बन के बैठा हुआ किसी का, मतलब हमारी कम्युनिटी से ताल्लुक ही नहीं है तेरा, मतलब तू किसी को रिपोर्ट कर रहा है, हाउ ऑन अर्थ दिस इज पॉसिबल। At various point in time, my uncles, my sort of cousins, and my father was like insistent कि यार ये क्या कर रहे हो यार, just let it be। 1,000 रुपए मिलते हैं तुमको एक एक महीने के, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्योंकि वो बचपन से ये सिखाया है यार, मतलब शहजाद आप भी उसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, बचपन से यही सिखाया ना कि यार कर लो, रिस्क ले लो, हो जाएगा, देख लेंगे। और आपके पास घर में बातें भी बिजनेस की हो रही हैं, आप जो है वो आपको कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है। आई थिंक एज अ किड आल्सो यू आर सपोज टू जस्ट गो आउट एंड टॉक टू एनीबॉडी। अब्बा जो है हाथ पकड़ के ले जाएंगे, बिजनेस कन्वर्सेशन में भी बिठा देंगे, और आपको जो है ना आसपास की कम्युनिटी में सब लोग जो है वो कुछ ना कुछ नया करते हुए। तो मुझे लगता है कि आई थिंक वी आर कन्फिगर्ड डिफरेंटली परहैप्स, शायद वो कम्युनिटी के अंदर बातें इतनी होती हैं तो वी आर कन्फिगर्ड डिफरेंटली, तो हम बचपन से सोचते हैं। मैं से थोड़ा सा ऑड मैन आउट यूं रह गया कि मुझे था कि यार हर बंदा रॉ काम कर रहा है। I would want to become an entrepreneur, but I want to polish myself a little bit more, and then I will jump into it. I've always had in my back of my mind कि I want to become a businessman, but not at that stage। कि पहले मैं जो दुनिया में हो रहा है उसकी मैं खबर ले लूँ, थोड़ा समझ लूँ, थोड़ा सा ग्रिप ले लूँ, and then I'll utilize that knowledge। लेकिन वो उसके बगैर जा ही नहीं सकता था। मुझे लगता था कि वो मेमन अगर अपनी नौकरी करते करते अगर एंड ऑफ द लाइफ पर पहुंच जाएगा तो वो बहुत रेयरिटी होगी। तो आई थिंक वो शायद मुझे लगता है कि ब्रीड में हमको सिखाया इस तरह से जाता है डे टू डे बेसिस कि हम उसके उसके अलावा कुछ और कर नहीं सकते। बहुत शुक्रिया, आज इंटरव्यू थोड़ा सा तवील हो गया, बहुत शुक्रिया आज आपके टाइम का। नाजरीन, यहाँ वक्त ख़त्म होता है हमारे शो का। आपको ये शो कैसा लगा हमें ईमेल कीजिए, ट्विटर पे बताइए, फेसबुक पे लाइक के ज़रिए बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।